Good evening, hello and welcome. You're watching CNN News 18. This is Nation at 5 with me, Poonam Burde. The big story we're tracking at this hour is the first test of failure for the India alliance. The Aam Aadmi Party and the Congress combined were fighting against the BJP for the mayoral elections in Chandigarh. The BJP candidate came up trumps. 8 votes were regarded invalid, and that has now struck a chord with the India alliance, with the Congress AAP combined, who's knocked on the doors of the High Court, claiming that this was injustice done to them. The votes that were meant for the Aam Aadmi Party and the Congress candidate were declared invalid, and which is why they have now knocked on the court's door. Let's cut across to Arvind Kejriwal, who's briefing the news conference. इशू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं। मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। 2 साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ के म्युनिसिपैलिटी के। उसके आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7 कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और एक अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के, तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। स्टेट कैलकुलेशंस है, स्टेट। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था, अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार, बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया और चुनाव इंडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं। इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं। लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव के वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है। ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है। और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं। यहां भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहां बैठेगा और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है,
तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछली साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सबको रोकना है। आपने ये कहा, कोर्ट आप लोग जा रहे हैं, ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने, अंत में आपने ये कहा कि कुर्सी से चिपके रहेंगे। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी तरह का बयान दिया था कि ये आखिरी वोटिंग चुनाव है और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाएगा बाकी कंट्रीज की तरह। तो ये आप मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा या फिर आप? ये सारे जो आसार दिखाई दे रहे हैं ये इसी तरफ इंगित करते हैं कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। अगर एक 10 बाई 10 किलोमीटर का छोटा सा शहर चंडीगढ़, उस चंडीगढ़ के छोटे से शहर के अंदर एक छोटे से मेयर का चुनाव, उसके अंदर अगर ये इस किस्म तक, इस हद तक नहीं गिर सकते हैं तो बड़े चुनाव के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। तो आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि ईवीएम जो है उसमें भी अब गड़बड़ी करने की सरकार? देखिए, अभी जो कई सारे मैंने देखे हैं वीडियोस, कई सारे, उसके ऊपर एक दिन अलग से चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को लेकर आगे भविष्य में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा चल रही है और आप भी लोकसभा चर्चा अच्छी चल रही है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हमारे भी कुछ ना कुछ नतीजे आएंगे। कई राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुके हैं। सर, इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं से, खासकर कांग्रेस के लीडर से क्या आपकी बात हुई है? क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पवन बंसल थे, अभी बैठे थे, तो जो भी करने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे।
आज मेरा मकसद चंडीगढ़ का मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है देश के लिए। चंडीगढ़ का मेयर आम आदमी पार्टी का बने, इसका बने, उसका बने, इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इंपॉर्टेंट है जो लोग गुंडागर्दी करके चुनाव जीतेंगे वो गुंडागर्दी का ही प्रशासन लेके आएंगे, वो आपके शहर में गुंडागर्दी मचवाएंगे। जो ईमानदारी से वोट जीतेंगे, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, वो शासन में ईमानदारी लेके आएंगे। आज इन्होंने जिस तरह से सरेआम गुंडागर्दी, अरे वोट आपके वोट, जो वो अधिकारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए, नॉन पेलेबल ऑफेंस है। उसने फ्रॉड करके सबके वोट बदल दिए उसने। ये कैसे परमिसिबल है? जनतंत्र तो सुप्रीम है, वोट तो एक तरह से बहुत सैक्रोसैंक्ट है किसी का भी वोट। आपने काउंसलर्स के वोट बदल दिए, काउंसलर्स के वोट पे टिक मार्क करते जा रहे हो और साइन करते जा रहे हो, टिक मार्क करते। ये क्या है? सरेआम गुंडागर्दी। ना वोट को मानते, ना किसी प्रोसेस को मानते, ना कानून को मानते, ना संविधान को मानते। सर, बिहार से लेकर झारखंड तक जो ईडी कार्रवाई कर रही है और हेमंत सोरेन हो चाहे तेजस्वी यादव हो, इस पर एक प्रतिक्रिया आप दे दीजिए। क्या आपका कहना है कि ईडी इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई क्यों कर रही है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्यों कर रही है। एक इन्होंने माहौल ये बनाया पूरे देश के अंदर, अब राम मंदिर का वो उद्घाटन हो गया, राम मंदिर का, अब तो इतनी सीट आएंगी और इतनी सीट आएंगी। अगर इतनी सीट आ ही रही थी तो ईडी की क्या जरूरत थी? फिर ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब इतनी सीट नहीं आ रही है, इसका मतलब ईडी की भी जरूरत है, फर्जीवाड़े की भी जरूरत है, गुंडागर्दी करने की भी जरूरत है, तब सीट आएंगी इनकी। अगर अपने आप सीट आ रही होती तो क्यों करते ये इतना सारा? क्यों ईडी पीछे भेजते? क्यों नीतीश जी को तोड़ते? क्यों उधर एनसीपी तोड़ते? क्यों शिवसेना तोड़ते? क्यों सबके पीछे ईडी छोड़ते? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी सीटें नहीं आ रही हैं। लोग इनसे परेशान हो चुके हैं, लोग फेडअप हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग ठीक से हो गई तो इंडिया गठबंधन इनको, आज अगर चुनाव ईमानदारी से हो जाता, इंडिया गठबंधन का सीधा सीधा था, 16 वोट इनके थे, 20 हमारे थे, हम इंडिया गठबंधन की पहली जीत होती। लेकिन ये तो इस तरह से गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके चुनाव जीत रहे हैं। सीधा सीधा था। आज का चुनाव तो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट था, हमारा एक भी आदमी नहीं बिका। 20 वोट थे हमारे, इनके 16 वोट थे, तो आज का चुनाव तो इंडिया गठबंधन जीत ही रहा था। तो फिर गुंडागर्दी करके इन्होंने इसको कर लिया। लगता है चुनाव आयोग का रुख करेंगे आप लोग? हाँ जी, चुनाव आयोग का रुख करेंगे इस मामले में? क्या इस तरह से आप कह रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि ईवीएम को लेकर भी है और बाकी चीजों को लेकर, लगता है कि वो एक बहुत अलग, बहुत बड़ा मुद्दा है, किसी दिन बात करेंगे आपसे ईवीएम का। इसी में एक कंडीशन है, इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठक में आप लोगों ने तय किया था कि इलेक्शन कमीशन के पास डेलीगेशन जाएगा और जो वीवीपैट के पर्चियां होती हैं उसको बैलेट पेपर के तौर पर, मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भेजा जा चुका है, तो उस पर मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन के लिए जिसको आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक चंडीगढ़ का छोटा सा इलेक्शन था, उसके लिए खुद जेपी नड्डा जी ने बधाई दी है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उसकी वजह से यूटी में जो है इस तरीके का विकास हुआ, जिसकी वजह से आप इंडिया। जेपी नड्डा जी से पूछिए कि 8 वोट इनवैलिड किस बेसिस पे किए उन्होंने। उनसे पूछिए कि क्या उनके पदाधिकारी ने जिस तरह से वोट्स को टेम्पर किया, फोर्जरी की, क्या वो इसको सही मानते हैं? क्या वो इस तरह की प्रैक्टिसेस को, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को, चुनाव के दौरान इस तरह की बेईमानी को सही मानते हैं? और क्या वो इस तरह से पाई गई जीत को सही मानते हैं? क्या वो इसको अनैतिक नहीं मानते? क्या वो इसको देश के लिए नुकसानदेह नहीं मानते? क्या केवल येन केन प्रकारेण जीतना उनके लिए सब कुछ है? मार के, पीट के, वोट टेम्पर करके, सब कुछ करके बस जीत जाओ किसी भी तरह से। सर, कल जिस तरह से हेमंत सोरेन को लेकर खबरें आ रही थी कि ईडी एक तरह से हंट पे दिख रही थी, लगातार खबरें प्लांट भी हो रही थी और दावा किया जा रहा था कि हेमंत सोरेन गायब हो गए, तो एक मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, आपको लगता है आने वाले समय में कार्रवाई और बढ़ने वाली है इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के खिलाफ? मुझे लगता है लोकसभा के पहले जिस तरह से इनका माहौल है, इनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। इंडिया गठबंधन स्ट्रांग है। आज आप मेरे से निकलवा लीजिए जो कुछ इन्होंने बिहार के अंदर किया। पिछली बार इन्होंने 17 सीट दी थी नीतीश जी को,
The national convener of the Aam Aadmi Party and the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, making some grave allegations against the BJP, not just in connection with the mayor candidate, with the mayor election in Chandigarh, but also as far as the big 2024 picture goes. Aam Aadmi Party levelling the allegation against the BJP of trying to rig elections. Rupashri, my colleague, joining us, getting us more details. Rupashri, not only was Arvind Kejriwal talking about what happened in Chandigarh and the fact that those votes were regarded invalid, all those votes that were in favour of the Aam Aadmi Party and Congress candidate, Arvind Kejriwal also going on to say that something like this could also happen when we see the Lok Sabha elections. Well, absolutely. In fact, as Aam Aadmi Party's national convener, that is the most important point that he was making. That according to him, if the BJP can resort to rigging in an election which is such a small election as in a mayoral election in a particular town, then imagine to what extent the BJP may go in order to have the results in its favor when national elections are concerned. In fact, after a very long time, Arvind Kejriwal has also alleged that the BJP would be indulging in rigging of EVM. But apart from that, he said that unless people are careful, unless people are cautious, unless this is taken seriously, then he has expressed the fears that the entire elections of 2024 could also be rigged. And that is the most important point that he made. That is the point that Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha also made. And that is the point that Punjab Chief Minister Bhagwant Mann also made. In fact, they were saying that if 36 votes cannot be counted as per rules, then what about the rules when it comes to counting of 90 crore votes? And that is a pitch that they are making. And in fact, if you have noted, then many of the India, allies who are part of that India bloc, which includes Congress Party, which includes Samajwadi Party, they have all come out and pointed at what they have argued are the irregularities in the Chandigarh mayoral election. Now, yes. The most contested point in these elections are that when the counting of the votes happened, then why did the presiding officer did not allow the election agents of all the parties to be present? And if he declared a vote to be invalid, then why did he not show the reason or show the parchi to other contestants also? And those are the reasons why the Aam Aadmi Party is questioning the credibility of this presiding officer. He is working at the behest of the BJP. Is the allegation the Aam Aadmi Party and the Congress make. This political fight is only going to escalate before the moment. Rupashri, thank you so much for getting us those details. Shifting focus now to more news coming in, and this is to do with the Samajwadi Party and Uttar Pradesh. In the run-up to the 2024 election, Samajwadi Party has released its first candidate list. 16 seats have been declared by the Samajwadi Party. The family seat of Mainpuri, where Dimple Yadav is the member of parliament from the sitting MP from, she will continue to contest from there. Son of Ram Gopal Yadav, Akshay Yadav will be contesting from Firozabad. We have details of some other key seats that have also now been announced by Akhilesh Yadav, Samajwadi Party. Amit, my colleague, joining us, getting us more details on this. Amit, 16 सीटों पे कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के. क्या इन 16 सीटों में कोई ऐसी सीट थी जिस पर कांग्रेस को भी अपना कैंडिडेट उतारना था? इन 16 सीटों की हम बात कर रहे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी जो है इस पर कांग्रेस पार्टी का दावेदारी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं तो उनका कहीं से इस पर दावेदारी नहीं था. इन 16 हालांकि कांग्रेस से लगातार अभी भी बातचीत जारी है. समाजवादी पार्टी ने साफ तरीके से उनको कहा है कि 11 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन ये जो 16 सीट है ये पहले से समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया था, जिसमें डिम्पल यादव मैनपुरी से, सफीकुर रहमान जो मौजूदा सांसद हैं संभल से, उन्हें टिकट दिया गया है. इसके अलावा फिरोजाबाद से अक्षय यादव का नाम बहुत पहले से ही चल रहा था, उन्हें टिकट दिया गया है. एटा से दिनेश शाक्य को टिकट दिया गया है. इसके अलावा अगर हम बात करें खिरी से तो उत्कर्ष वर्मा है और उन्नाव से अनु टंडन की चर्चा बहुत दिनों पहले से चल रही थी कि अनु टंडन वहां से लड़ना चाह रहा था. तो ये जो 16 सीट है, लखनऊ से रविदास मल्होत्रा, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, ये अकबरपुर से हम बात करें तो रामराज पाल, ये लगातार ये अपनी दावेदारी लगातार पेश कर रहे थे. और जाहिर तौर पे इन 16 सीटों से जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि यहाँ कांग्रेस दावेदारी नहीं कर रही थी, ये पहले से तय थे कि ये मजबूती से इन जगहों पर चुनाव लड़ेंगे. जी. और अमित, अब जो ये लिस्ट आ चुकी है, क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो नेगोशिएशंस चल रहे थे, जो बातचीत चल रही थी सीटों को लेके, वो अब खत्म हो चुकी है, डिसीजन हो चुका है कांग्रेस को कौन सी सीटें दी जाएगी?
देखिए, अगर हम बात करें तो फिलहाल जो है 11 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वो कांग्रेस को टिकट देंगे, और जिसमें भी हमारे यूपी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत होती है वो कहते हैं कि उन्हें 20 सीटें चाहिए। अब देखना होगा कि जिन 20 सीटों पर वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। Ji Amit, धन्यवाद for getting us those details. The Samajwadi Party is sounding the poll bugle for 2024, releasing its first list of candidates. 16 seats have been declared in the state of Uttar Pradesh. What the Congress gets in this alliance is yet to be known. We'll get more details of what the Samajwadi Party is okay with lending out to the Congress as far as the state of Uttar Pradesh goes. For now, we're slipping into a quick break here on this edition of Nation at 5. Back in just a few minutes. India's first breakfast show that wakes up to genuine questions that matter in our life. Like, which is the latest phishing scam you need to be aware about? What careers are in demand? How to have AI write an ace resume? Basically, everything you need to know right as you sip that morning coffee. So, set your alarms and get ready to start your day with a breakfast experience like never before. The Breakfast Club with me, Sonal Mehrotra Kapoor, only on CNN News 18. Modi's to deal a blow directly against Iran, a step he has been reluctant to take out of fear of igniting a broader war. Sunday's strike marks the first deadly attack against U.S. troops since the Israel-Hamas war erupted in October. The United States is trying to determine how the suicide drone managed to evade the base's defenses. What I can definitely say is that the strikes that took place on U.S. service members represent a fundamental change in the rules of engagement. Allison McManus, the managing director of the Department of National Security at the Center of American Progress, says she anticipates a response to the drone attack quite soon. Iran has taken advantage, frankly, of the current moment of conflict to do what Iran has been doing for many, many years, which is to disrupt, to target the U.S. and partners in a variety of ways, mostly through the efforts of its proxy militias. So again, what Iran is doing is testing where that line is, how much it can get away with in targeting U.S. interests, whether those are military interests or economic interests, and really testing the U.S. in terms of its response. U.S. troops have been attacked over 150 times in Iraq, Syria, and Jordan, as well as on warships in the Red Sea, where Houthi fighters in Yemen have been firing drones and missiles at them. Well, good morning, everybody. Let me start with my outrage and sorrow for the death of 3 brave U.S. troops in Jordan and for the other troops who were wounded. The President and I will not tolerate attack on U.S. forces, and we will take all necessary actions to defend the U.S. and our troops. Now, at this important time, I'm glad to be back at the Pentagon. I feel good and am recovering well, but still recovering. And I appreciate all the good wishes that I've received thus far.
we will respond. The White House on Monday said U.S. President Joe Biden was weighing his options after the drone attack in Jordan by Iran-backed militants that killed 3 U.S. service members and wounded dozens more. Here's White House National Security spokesperson John Kirby. We do not seek another war. We do not seek to escalate. But we will absolutely do what is required to protect ourselves, to continue that mission, and to respond appropriately to these attacks. Earlier in the day, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin spoke on the issue as well. The President and I will not tolerate attack on U.S. forces, and we will take all necessary actions to defend the U.S. and our troops. Later, Pentagon spokesperson Sabrina Singh identified the soldiers killed in Sunday's attack, the youngest victim just 23 years old. The names of those soldiers who lost their lives were Sergeant William Rivers, Specialist Kennedy Sanders, and Specialist Breonna Moffett. Right now, we assess that there are more than 40 that have been injured. We do expect that number to continue to fluctuate as our service members, as you know, with TBI, report symptoms later on, so that number could continue to grow. The attack put new political pressure on Biden to deal a blow directly against Iran, a step he has been reluctant to take out of fear of igniting a broader war. Sunday's strike marks the first deadly attack against U.S. troops since the Israel Welcome back. You're watching Nation at 5. The ED heat on Chief Minister of Jharkhand Hemant Soren is only increasing. For the last 48 hours, nobody knew where Hemant Soren was. He was believed to be in Delhi, but he was not at his residence. So much so that missing CM posters came up looking for Hemant Soren. Today, 48 hours later, he resurfaced, waving at his supporters at Ranchi outside his residence. He also then chaired a crucial meeting at his residence with MLAs of JMM, with sitting ministers in the Jharkhand government as well. What's important is that his wife was present at this crucial meeting as well. That has now prompted doubts over whether Hemant Soren is looking to go the Lalu Prasad way. Are we looking at his wife, who will be a proxy in case there is crackdown on the Chief Minister of Jharkhand by the Enforcement Directorate, who is investigating a money laundering case against him? माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। वो इस स्टेट का एक बहुत प्राइम इंस्टीट्यूशन है। उस संस्थान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए, वो पूरी तरह सीआरपीसी की धारा 499 के शर्तों पर लागू होती है। It used to be said that Jharkhand is a poor state, and certainly the people of Jharkhand have remained poor, because whether it is a Congress MP's house where they are recovering thousands and hundreds of crores from, or the Jharkhand Mukti Morcha head, the Chief Minister's house where they are recovering cash from, it is clear there is rampant corruption in the INDI alliance. The two things that characterize the INDI alliances, three things rather, are: one is corruption, second is appeasement politics, and the third is dynasty politics. My colleagues Anshul and Saurabh joining us, getting us more details. Before I get into the politics of this, let's talk about the investigation of the Enforcement Directorate. Anshul, tomorrow is the last day as per the Enforcement Directorate when they would have had to question Hemant Soren. He now is in Ranchi, we know for sure. So what is going to be the Enforcement Directorate's next course of action? Are they going to be quizzing him in Ranchi next? So yes, they will be quizzing him in Ranchi. In fact, the last communication that happened from the Chief Minister's office to the Enforcement Directorate, in that email it was very clearly stated that since the Chief Minister is busy in the month of February because of the budget session that is impending in Jharkhand Assembly, hence on the 31st of January at 1 PM the Chief Minister will make himself available in front of the Enforcement Directorate. But yes, we saw how yesterday on the 29th of January the salutes of Enforcement Directorate actually reached the residence of Hemant Soren, where they had specific inputs that he was at his residence. Now ED in its defense is saying that they had found some new
new evidences due to which they had to confront the chief minister at the earliest and at a very, very urgent basis, and hence they decided to go ahead and confront him at his residence. But to their surprise, the chief minister was not over there. So tomorrow, for sure, at 1 p.m, ED is going to go ahead and quiz Hemant Soren. Now, the troubles for Hemant Soren is going to increase because of his unavailability out here in the national capital. There were searches that were carried out in his residence at Shanti Niketan in South Delhi, and in that 36 lakh rupees cash has been found from his residence, and not only that, but also 2 BMW vehicles has been seized, and according to sources within the Enforcement Directorate, these BMW vehicles have been earned through proceeds of crime. Now, the Jharkhand Chief Minister would have to tell the Enforcement Directorate as to the 36 lakh rupees that has been seized by the Enforcement Directorate. Is that money accounted for, or is that money unaccounted? And the BMWs that has been seized, if at all they are proceeds of crime, and how did he get his hands on these vehicles as well? So yes, troubles for the Jharkhand CM is definitely going to increase. Tomorrow is going to be very, very crucial, because remember, there is going to be a lot of pressure building tactics that will be applied on the investigating agency as well, since it is happening in Jharkhand. We saw how the last time around, absolutely, the last time around when he appeared before the Enforcement Directorate, we saw the massive show of strength by JMM supporters and leaders who were out on the streets as Hemant Soren presented himself before the Enforcement Directorate. Similar scenes are expected tomorrow as well if the ED sleuths do quiz him. Whether that happens at his residence or at the ED office in Ranchi is also something that we will keep an eye out on. But sort of as far as the JMM and its political next steps are concerned, there was a crucial meeting that Hemant Soren chaired today, not just of his ministers and MLAs. His wife was also present there. Are we looking at his wife perhaps going to be the proxy in case it goes down for him tomorrow? Very much expected because it was the first time that Kalpana Soren, the wife of Hemant Soren, she attended a meeting of such kind, and earlier also such meetings were held, but never before that Kalpana Soren had participated in the meeting, although the name of Kalpana Soren had emerged earlier also. But this is the time when it is looked as very crucial, as one is speculating that if Hemant Soren is taken into custody, then who will lead the UPA party led by JMM? So, I would like to remind that in last month, JMM MLA from Gandhi in Giridih constituency, he had resigned and had vacated his MLA seat over there, which is unreserved seat, and because Kalpana Soren comes from Odisha, she can't contest election from reserved seat. So this particular seat that was vacated is an unreserved seat. So many political pundits and as well as our sources also saying that if Hemant Soren has to step down in any kind of circumstances, then Kalpana Soren will be named as the leader of the JMM-led UPA government. Remember, after Hemant Soren, who was not traceable for past 2 days, BJP has been tweeting on social platforms and has been giving media bites and telling him fugitive. And in fact, a post by the BJP president Babulal Marandi, he had posted notice saying that those anyone who will give the information of Hemant Soren, who is in a white shirt, black pant and in slipper, then he will be awarded for rupees 11,000. This particular post created a huge uproar among the Hemant Soren supporters, and after that a PC was conducted by JMM's spokesperson and General Secretary Supriyo Bhattacharya, who said that this post was very derogatory and they are going to file a defamation case. So it will be interesting to see that in near future whether such a case is registered or not. But yesterday huge protest took place on the streets of Ranchi, where thousands of supporters had gathered from most of the districts of Jharkhand, and they had created a law and order situation, and after that governor had to intervene and
he had summoned DGP and the Chief Secretary of the state, and today 144 section was imposed outside CM House, Governor House and ED office. So now tomorrow is a big day, not only for Hemant Soren but for the politics of Jharkhand, which and it's also going to be a big day for the India Alliance. JMM is a part of that. We've already seen heat on the Yadav clan in Bihar as far as the RJD goes. Another ally facing the heat of the agencies. How the India Alliance comes together is something that we'll have to see. Arunima, my colleague, also joining us, getting us more details as far as the investigation go. Now, as far as ED's probe into this money laundering case goes, Arunima, yesterday or this summon is the 10th summon, and so far only one time has Hemant Soren presented himself for questioning. Yes, and he told ED that he was available for questioning on the 31st. But the ED, I think ED officials said that they wanted to make good of the situation where Hemant Soren was in Delhi. They had some fresh inputs and they wanted to question him with regards to that. But he never appeared before them. So tomorrow it will be key to see whether Hemant Soren A appears before the ED, as he said in the email. B, if the ED's investigating officer lets go of him after the questioning, or pushes for custodial interrogation, because that is what the political buzz seems to be, that the ground is being prepared to take Hemant Soren into custody. The meeting at 7 o'clock that JMM has called is also being seen in that light. Right, so tomorrow is going to be a big day for Hemant Soren, for the JMM and of course the India Alliance. Are we going to be seeing the noose tightening around the sitting Chief Minister? Will the ED go beyond just questioning? That is something that we will keep an eye out on. Anshul, Arunima and Saurabh, thank you so much for getting us perspective on that. The political war of words meanwhile continues. The BJP says that this is what the India Alliance represents and the agencies are working round the clock to root out corruption. The opposition in turnarounds and says that this is nothing but witch hunt and vendetta. The agencies are behaving at the behest of the BJP. Listen in to those war of words. हम लोग सारे लोग एकजुट हैं और एक मुश्त हैं। सरकार टस से मस नहीं होगी। मुख्यमंत्री बदलने की कोई बात ही नहीं है। देखा जाएगा आगे के बाद कहाँ जाइएगा मंत्री? आगे का इसके बाद जाएंगे हम लोग अपना गेस्ट हाउस में जाएंगे, बैठक करेंगे, बात करेंगे। पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? आप देखें, शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था। शनिवार बंद रहता है, रविवार बंद रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों? देश के इतिहास में पहली घटना है कि एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है, लापता है, और इसलिए लापता है, फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया था। आप जांच एजेंसियों के सामने नहीं आएंगे, आपको लगातार समन देने के बावजूद आप उनका आदर नहीं करेंगे, अनादर करेंगे, संवैधानिक पद पर बैठ कर के संवैधानिक मर्यादा और कानून को तोड़ने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है। इसमें हेडलाइन मैनेजमेंट कितना है और क्या है मैं नहीं जानता। एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है। चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे। इनकी आप देखिए ना रफ्तार क्या चल रही है। हमें तो लगा था कि राम मंदिर के बाद इनका मन ठंडा हो जाएगा। Like you, we are also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. I am repeatedly telling it. We have to work within the Constitution. We all are law-abiding citizens. इसमें तो बड़ी सीधी सी बात है, ये जो संस्थाएं होती हैं इनका काम हम कहते हैं भ्रष्टाचार का, किसी तरह का कोई पर किसी के ऊपर चार्ज है, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून से बड़ा नहीं है, वो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें किसी तरह कोई आपत्ति नहीं है। सवाल इस बात का है कि उसी मुद्दे पर जब सरकार
विपक्ष के ऊपर या जो भी सच की आवाज़ कहना चाहता है, उनके खिलाफत कोई सच्चाई की आवाज़ लाना चाहता है, उसको मुखर करना चाहता है, जो देश की चुनौतियां हैं जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, जब उनसे प्रश्न किया जाता है तो सरकार जो है उसका सामना नहीं कर सकती और उसका सामना करने की बजाय अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ईडी का, सीबीआई का, इनका माने सामने लाती है, उसका दुरुपयोग करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। In the run-up to the big 2024 clash, corruption is going to be a plank on which the BJP mounts pressure on the India alliance partners. Tomorrow is going to be a big day for Hemant Soren and the JMM. We'll keep a track of that and much more here on CNN News 18. For now, it's time for a quick break. Back in just a few minutes. Moot point being that for Mamata Banerjee, this is cold arithmetic. This is cold election arithmetic. She doesn't stand to gain as much from allying with the left and the Congress as they stand to gain by allying with the TMC. The TMC is going to fight on its own. Then where is the India alliance? The Vigraha which is going to be there now as Ramlala Virajman. What did you feel? I had tears in my eyes. I cried, to be very honest. I don't know why. It was there. Jai Shri Ram. All the shops here in this 2-kilometer long road now have the same consistent facade to give this entire area a facelift. Some are saying that even for an orator like Narendra Modi, it was one of his best speeches. This is a Nyaya Yatra, isn't it? It's about high principles of upholding justice, delivering justice and upholding the law. But the person in the middle of your frames stands accused today, sir, of breaking the law. Brought to you by. Then in October, the United States is trying to determine how the suicide drone managed to evade the base's defenses. What I can definitely say is that the strikes that took place on U.S. service members represent a fundamental change in the rules of engagement. Allison McManus, the managing director of the Department of National Security at the Center of American Progress, says she anticipates a response to the drone attack quite soon. Iran has taken advantage, frankly, of the current moment of conflict to do what Iran has been doing for many, many years, which is to disrupt, to target the U.S. and partners in a variety of ways, mostly through the efforts of its proxy militias. So again, what Iran is doing is testing where that line is, how much it can get away with in targeting U.S. interests, whether those are military interests or economic interests, and really testing the U.S. in terms of its response. U.S. troops have been attacked over 150 times in Iraq, Syria, and Jordan, as well as on warships in the Red Sea, where Houthi fighters in Yemen have been firing drones and missiles at them. Well, good morning, everybody. Let me start with my outrage and sorrow for the death of 3 brave U.S. troops in Jordan and for the other troops who were wounded. The President and I will not tolerate attack on U.S. forces, and we will take all necessary actions to defend the U.S. and our troops. Now, at this important time, I'm glad to be back at the Pentagon. I feel good and am recovering well, but still recovering. And I appreciate all the good wishes that I've received thus far.
we will respond. The White House on Monday said U.S. President Joe Biden was weighing his options after the drone attack in Jordan by Iran-backed militants that killed 3 U.S. service members and wounded dozens more. Here's White House National Security spokesperson John Kirby. We do not seek another war. We do not seek to escalate. But we will absolutely do what is required to protect ourselves, to continue that mission, and to respond appropriately to these attacks. Earlier in the day, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin spoke on the issue as well. The President and I will not tolerate attack on U.S. forces, and we will take all necessary actions to defend the U.S. and our troops. Later, Pentagon spokesperson Sabrina Singh identified the soldiers killed in Sunday's attack, the youngest victim just 23 years old. The names of those soldiers who lost their lives were Sergeant William Rivers, Specialist Kennedy Sanders, and Specialist Breonna Moffett. Right now, we assess that there are more than 40 that have been injured. We do expect that number to continue to fluctuate as our service members, as you know, with TBI, report symptoms later on, so that number could continue to grow. The attack put new political pressure on Biden to deal a blow directly against Iran, a step he has been reluctant to take out of fear of igniting a broader war. Sunday's strike marks the first deadly attack against U.S. troops since the Israel-Hamas war erupted in October. The United States is trying to determine how the suicide drone managed to evade the base's defenses. What I can definitely say is that the strikes that took place on U.S. service members represent a fundamental change in the rules of engagement. Allison McManus, the managing director. Welcome back. Let's now get you some breaking news coming in from Bihar, where Nitish Kumar, the chief minister who switched sides but remained the chief minister 2 days ago, is now looking to expand his cabinet. We're given to understand that expansion is expected within this week. Payal, my colleague, now joining us, getting us more details. Payal, in another 3 to 4 days is when we can expect Nitish to expand his government. For now, he has only 8 ministers. Do we have any details or do you have any inside scoop on who would be included in the expansion? Well, to begin with, yes, we are given to understand that Nitish Kumar will in fact be expanding his cabinet within the next 4 to 5 days is what we are given to understand. Essentially, it could induct a lot of new faces. In terms of the division of the cabinet portfolios, it could be pretty much on the lines of what we saw last time around when the NDA government was in power. So obviously, there will be an equal share. But the sense within the government over there in the state and also with the coordination in the center has been that there is a time to induct people from all castes. Because remember, Bihar is a very, very caste-enriched place. And to bring in new faces, to bring in younger faces into the cabinet is something also which is being considered. Given the fact that the assembly elections are scheduled to take place next year, so obviously they'll have at least a year plus time to in fact experiment with all of this is what we are given to understand. So that is what is going to happen. We are given to understand that probably there will be a lot of distribution in terms of caste distribution when it comes to finalizing the cabinet portfolios. And, there will be a lot of representation which is going to be given for women because, Bihar is a state where women have been extremely important and extremely critical when it came to vote bank for any political party. And of course, JDU and the BJP have all been at the welcome receiving end of the women's votes. So that's the reason a representation could also be given to them. Last time around, the BJP had a deputy CM as a woman, but this time around, there's no deputy CM as a woman. Samrat Chaudhary is there, and Vijay Sinha has been made deputy CM. So the BJP is also going to be seeking for portfolios to come, for their way in terms of not just caste equation, but also representation for women. The finer tunes the finer tuning is happening. The leaders between the BJP here in the center and of course the BJP in the state are in coordination with the JDU to finalize this as far as the entire equation calculation is concerned. Right, we'll keep an eye out on what exactly that fine print is as far as the expansion of the Bihar cabinet goes and whether or not that is something that is done, kept in mind the upcoming 2024 battle. For the moment, Payal, thank you so much for getting us the latest on that. Shifting focus to distressing news that came to the fore from Kota in Rajasthan. Unfortunately, another young life lost. An 18-year-old student died by suicide. She was to appear for her JEE exam over the next 2 days. Her suicide note has now gone viral where she calls herself a loser. She apologizes to her parents. Now, she was the eldest of the 3 siblings. Her father was a security guard at a bank.
Unfortunately, this is the second such instance in just 1 week. Last year, from Rajasthan, specifically from Kota, 27 such distressing cases came to the fore, which has once again brought the focus back on the kind of pressures these coaching centers put on students, on aspirants, like the one we just lost. पेपर आने वाला था, एग्जाम इसका डेट भी आई थी 31 को, तो उसको लेके स्ट्रेस में थे। 12th भी दोबारा पढ़ रही थी, परसेंट कम थी तो पिछले साल से। पढ़ाई का तनाव था बहुत ज़्यादा, पढ़ाई का स्ट्रेस था। कभी बात हुई कि इस तरह की भाई पढ़ाई का तनाव है? पढ़ाई की बोलती रहती थी, वैसे 6-7-8 घंटे पढ़ती रहती थी, ऑनलाइन भी क्लास चलती थी, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा रहती थी। 120 फुट में, उसका नाम निहार का था, 19 साल की थी। कल जेई का एग्ज़ाम था इसका, उसको लेके थोड़ी डिप्रेशन में थी। ये घटना आज सुबह की है। थोड़ा पढ़ाई का डिप्रेशन था, ऐसा परिवारजन बता रहे हैं इसके। Shifting focus now to the Enforcement Directorate heat that is on the Yadav Parivar in Bihar. After Lalu Prasad Yadav was quizzed yesterday, Tejashwi Yadav is also now under the radar. This is for the Land for Jobs scam. The Enforcement Directorate, the CBI, has also investigated this case where the Yadav family allegedly received kickbacks for promising jobs in the state of Bihar. This refers to the time when Lalu Prasad was the Railways Minister. In fact, CNN News 18 also accessed details of the charge sheet that was taken cognizance of by the court in this particular case. Not only are Lalu and Tejaswi named in that charge sheet, other family members including Misa Bharti are also named. That has now triggered a big political fight within the opposition and the BJP ahead of the 2024 battle. It is a valid probe versus vendetta by the BJP is the allegation. Listen in to those war words. So we now see Tejashwi Yadav has reached at the ED office at Bank Road in Patna, and we see the supporters, they are raising slogans, Tejashwi Yadav Jindabad, and they are not allowing him to enter inside the ED office. Tejashwi Yadav is requesting his supporters to calm down, to let him go inside and do not create any law and order situation. Yesterday also we saw how supporters were not allowing Lalu Yadav to come out of the car and enter the ED office. But now we see Tejashwi Yadav is coming out of his vehicle and is trying to enter in the ED office, which the supporter doesn't want him to appear before the ED. Tejashwi Yadav has been continuously requesting his supporters to calm down, to let him go inside, but the supporters, who are the staunch supporters of RJD, they are not allowing him to go inside. They are raising slogans. But Tejashwi Yadav had earlier appealed to the karyakartas of RJD not to take law in their hands, not to create any law and order situation. शक्ति जी, आज फिर से एक बड़ा दिन है। कल देखा हमने लालू यादव को 9 घंटे से ज़्यादा उनकी पूछताछ हुई और आज तेजस्वी यादव का पूछताछ है। किस तरह से देखते हैं इन सारी खबरें? लालू प्रसाद जी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, चिकित्सकों ने 1 घंटा से अधिक बैठने की इजाज़त नहीं दी थी। लंबी पूछ 9 घंटे तक की, जो उनके सेहत के साथ खिलवाड़ था। इस देश में जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग राय रखती है, लोकतंत्र संविधान में आस्था रखती है, भाजपा चाहती है कि इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी न रहे, पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल करती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। एजेंसियों का दुरुपयोग है देश के अंदर में, स्वायत्तता समाप्त हो गई है। एक बात जान लीजिए, तेजस्वी जी पर क्या आरोप है जी? वो तो माइनर थे, मुझ भी नहीं आया था, दाढ़ी भी नहीं आया था। एक पिता के पुत्र होने के कारण दुनिया के इतिहास में एक बता दो कोई ऐसा केस, किसी लॉयर को उठाओ और दुनिया का एक एग्जाम्पल बताओ दुनिया का, जो इस तरह के केसों में किसी को फंसाया गया हो। ये आपका डर है 24 का। वीरेंद्र जी, एक तरफ देखा जा रहा है दिल्ली कोर्ट समन की है राबड़ी देवी, हेमा यादव, मिसा भारती को, और अब इधर पटना में देखा जा रहा है तेजस्वी यादव आदरणीय लालू प्रसाद यादव परिवार को और एनडीए घबरा गई है।
इसलिए सब पर सम्मान किए जा रही है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जिस नेता के पास जन होता है उसको किसी का भय नहीं और डर नहीं होता है। नीतीश कुमार पे अब आप लोगों का क्या स्टैंड है? अब सवाल है कि अब दुनिया ने तय कर लिया है कि हम अपने बेटा का नाम अब नीतीश कुमार नहीं रखेंगे, क्योंकि पलटू राम पहले कहलाते थे और ये मोदी जी भी पलटू राम और अमित शाह भी पलटू राम। अब पता नहीं वो पलटू है कि वो पलटू है कि दोनों ही पलटू हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगाते रहे हैं। इसलिए इंडिया अलायंस का अब क्या होगा? एकदम हम लोग बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है, वो है। Welcome everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching Plain Speak with me, Shivani Gupta. It's been a rather dramatic 2 days or so in which Jharkhand Chief Minister Hemant Soren was declared untraceable by central agencies like the ED and even Delhi cops. Even as the former visited Soren's Delhi residence upon receiving information that he is in town. But the Chief Minister was nowhere to be found at his Delhi residence. His security and staff with him also had their phones switched off, allegedly, and there was massive alarm all around for about 24 hours. By this evening, finally Soren had surfaced in Ranchi. He has travelled by road, we are being told, from Delhi over the last couple of days, and he will be appearing before the agency finally on Jan 31 after skipping about 10 summons in the money laundering case he faces. While this captured much eyeballs today, the opposition latched on to this and other episodes to attack the government on the danger of democracy dying if BJP came back to power narrative. The opposition raised the issue of agency action in all-party meet today, but outside of it too, both Congress and Aam Aadmi Party made statements which implored the public to vote not really necessarily to make anyone win, but solely to save democracy in 2024. Otherwise, they say it could be too late. Now, have we heard this before? Well, despite what the opposition may feel, just like there is some heightened activity in their camp post the Pran Pratishtha of the Ram temple, there is also heightened action by agencies with several opposition leaders facing increasing heat ahead of the next general elections. Or is that not the case? We take that question to our guest in just a bit. But let me first take you through the drama that unfolded all through yesterday and today. A period of about 24 hours and more where the Chief Minister was declared untraceable and nobody had really seen him. The officials couldn't find much from his staff in Delhi or Ranchi either. So January 26 is when Jharkhand CM Hemant